Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Uh, Today we'll be talking about. I will be taking the program in the TASM. Okay, the next experiment that is, if a given array or if the given number is there, if there are four numbers, and among these four numbers, I have to sort them in ascending or descending order. Okay, so the problem statement here is that I need to sort the given numbers in ascending or descending order. Okay, so that is the main intention of this program. So before that, we have already studied how to get the smallest number and the largest number. Okay, and before this, let me let you know the syllabus. Okay, I think you are supposed able to see the syllabus here. Now in the syllabus, we have already completed. If you see this module 3, so we have completed 3.1, we have completed 3.2, we have completed 3.3, that is assembly directives. And if you see 3.4, here it says that we have to understand the programming and debugging of assembly language program. Okay. So while explaining you the instruction sets, okay, while it's explaining you the instruction sets, I have explained you some with an example. Side by side, we are also understanding the instruction sets and the programming in TASM. Okay. So while explaining you the program in the TASM, I'm trying to explain you different instructions. Okay, different instructions. Even we have seen in the program what are the assembly directives. Now you will be able to identify, yes, this is assembly directive, yes, this is instruction set, or this is an instruction. Okay, so we have, if you see 3.4, it says that 8086 programming and debugging in assembly language programs related to arithmetic, logical, delay, string manipulation, stack and subroutines, input output, timer and counter. So you have to understand some of the programs which are related to with arithmetic, logical, delay, and so on and so forth. So we have seen some of the arithmetic operations in the TASM. We have seen the logical. Okay, we need to see what is the delay, string manipulation. Okay, string manipulation. These are the some instructions which we will be able to see in today's program. Okay, string manipulation, that is compare, exchange. So we are playing with the string operations, or we are playing with the string. So this will be able to see in the string manipulation. Okay. Regarding the stack and subroutine, I have already given you the understanding what do you mean by stack, what do you mean by subroutine. Okay. Other than the main program, if you go to the small program, that is subroutine. If it is because of interrupt, then it is ISR. Okay. And input and output, timer and counters, this thing we'll see in the consecutive programming when you see in the TASM. Okay. So as far as 3.4 is concerned, I'm not going to go into the detail of this input output. This thing we'll study while understanding the programming in the TASM. Okay. And the last one, that is 3.5, that is introduction to interrupt 21H. जो मैंने आपको कल बोला था कि please write down in the note, that is int 21H, that is int 21, 4ch. So this 21H is important one because it is related with the DOS interrupt. So you have two types of interrupt also, that is depending upon the operating system or the DOS you are using or BIOS you are using. So DOS interrupts are different and BIOS interrupts are different. As far as int 21 is concerned, it is related with the DOS interrupt. Okay, so 3.5 we'll see in detail. Okay, and programming मैं इसके लिए कुछ अलग नहीं ले रहा हूँ. For while explaining you the programming in the TASM, in the experiment, in the practicals, we'll see such of the these programs related with the arithmetic, logical, subroutines, and string manipulation. Okay. Then after completing this, we'll move to the module number 4. Okay. So this is the module which is I have to complete after completing this instruction set and program. Okay. Then, so today we are seeing about the program. How do you write down the program? If I have given the numbers, 4 numbers are given to me, I need to sort them in ascending order. Okay. Similarly, जैसे मैंने to find the largest number, to find the smallest number, I have explained you for the largest number, and I have told you with the two small modifications, you can convert that same program to find the smallest number. Okay. So before going to that, these
uh, yes, before going to the program, we will be using some of these instructions. The instruction which is called as JB. Okay, the JB instruction. You will see this JB instruction here. Yes. Okay. So this is the instruction which we'll be using. Now you can see the name and the alternate name and the alternate name. Okay. So whenever you are using JB, now this is a JB jump if. Now this is a conditional jump. When the condition is satisfied, you will jump. Now what is the condition? Jump if below. Agar kam hai to, if less than. Okay. या फिर there is alternative name, that is JNAE. Jump if not above or equal. Jump if not above or equal. JNAB. AE. J stands for jump, N stands for not, A stands for above, E stands for equal. Okay. So you can use JB or you can use JNE. Okay. Either of these two you can use. So in our program, I will be using JB program, JB instruction. Okay. I will be using JB instruction. Okay. Now there are instructions which we'll be using in this program, that is exchange. Okay. I will be using this particular thing to write down this exchange. Okay, because I do not have the slide to explain you exchange. So there is exchange, EXTC. Okay, so we will be using this particular command or instruction, exchange. Okay, now regarding this exchange, okay, we have only few formats. Okay, we have only few formats. One format means what typical instruction can be associated with exchange. That means, or you can see in other words, what operands I can use along with exchange. Okay, so while writing down these different variants of exchange, you can write down along with me. Okay, or I will dictate and you can write down. So the first variant, I will write down here, first variant. The first variant is exchange, and the operands are, please write down, operands are CX, because we are going to use one of these variant, CX comma SI, CX comma XI. So this is one of the variant. Okay. So you have written first variant XCHG space CX comma SI. So in this, CX is not new to you, SI is also not new to you. As far as CX is concerned, CX is also called as counter register, because most of the time CX register is used for counter or counting. Okay, so even one more thing you are familiar with, that CX can be split into CL and AH. CL lower 8 bits, TH higher 8 bits. Okay, so here I'm using CX comma SI. Now even SI is not new to you. SI is what? It is a source index. Okay, we have already studied about the source index. Source index will give you the offset. Okay, so for this exchange CX comma SI, you please write down further what is the meaning of this particular instruction. Write down the content of SI register. Is exchanged with the content of CX register. So can I write down in short? It means that CX में जो भी कुछ content है, that is exchanged with the content which is present in SI. So for exchange we have 3 variants. ये 3 variants के अलावा हम कुछ भी different operands use नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको 3 variants बता रहा हूँ. Because in our program we are using this XCHG. So what is the meaning of this particular instruction?
that the content in CX and the content in SI are getting swapped, or they are exchanged. They are getting exchanged. So this is the first one. Write down the second one. Write down the second one. It is X C H G space, and the two operands are DH. So while explaining you the program side by side, I am explaining you the instructions also. So everything is getting completed. The programming as well as the instruction. So you have this instruction, that is a DH, comma CL, X CHG DH, comma CL. So here the same thing. You please write down the content of CL register is exchanged with the content of DH register. आप बोलोगे सर DH ही क्यों लिया, DL क्यों नहीं लिया? So this is by default. This is by default. So DH is the content of DH is exchanged with the content of CL. Now if you see carefully, content of CL is also 8-bit, content of DH is also 8-bit, content of SI is 16-bit, content of CX is also 16-bit. तो 16 to 16-bit ही एक्सचेंज होगा. आप बोलोगे 8 और 16 में करोगे, वो नहीं होगा. 8 बिट के लिए आपके पास DH है, 8 बिट के लिए आपके पास CL है, 16 बिट के लिए आपके पास SI है, 16 बिट के लिए आपके पास CX है. ओके, तो आपको जैसा लगता है वैसा करो. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, और जो हम यूज करने वाले हैं, अदरवाइज see I am saying the 3 variants, but these 3 variants can be used with little bit of modification. Okay, so you will understand this. And the third variant is exchange, that is X C H G, exchange space. See what I am writing down. Now I am writing down the square bracket. DI so you know what is DI, that is a destination index. DI plus 0. Now this is just an example of this particular variant, so that it will be more clear to you. 07H square bracket close, comma DX. Yes. Okay. Now here you need to understand important thing. Okay. If you see the first example, okay, it is saying that CX and SI. Now you know that whatever you write down at this place. Now see here, you have two operands. Before comma, this is the first operand. After comma, this is the second operand. Okay, so second operand में हम जो भी लिखते हैं, that is mostly the source. और comma के पहले जो भी लिखते हैं वो होता है destination. Okay, वो होता है destination. Means 99%. So here, that's why second operand I have taken SI, that is source index. And if you see here, okay, I will explain you this particular variant. But if you see here, see before comma, I have told you that is used as a destination. So that's why it is used as a DI. So destination index. Okay, destination index. So after comma, source, before comma, destination. That's why after comma, SI is used, SI register is used, and before comma, DI register is used. Because first operand, as far as first operand is concerned, it is destination, and after comma, the second operand is the source. Okay, so this is just for understanding. इसका मतलब ये भी होता है कि मैं first operand में SI नहीं लिख सकता हूँ. इसका ये भी मतलब होता है comma के बाद में DI नहीं लिख सकता हूँ. That is for any instruction. जिसी भी इंस्ट्रक्शन में आप DI और SI यूज करते हो, तो SI will be used as a second operand, DI will be used as a first operand.
ओके, प्लीज मार्क समवेयर इन योर नोटबुक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए उसको सोर्स इंडेक्स कहा जाता है और DI को डेस्टिनेशन इंडेक्स कहा जाता है। ओके, यस, नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वेरिएंट। So exchange DI comma DI plus 07H bracket close. Be careful, this is a square bracket comma DX. Now ये instruction क्या कर रहा है? Please write down the content of DX register is exchanged with the content of memory. Is exchanged with the content of memory. Is exchanged with the content of memory. Okay, now here you have to be very careful which is that particular memory. वो memory बताता है आपका DI, वो memory आपका बताता है DI। अब वो कैसे बताता है? All of you pay attention, I am writing down here। Okay, now here your 07 is used as a offset, will be used as a offset। Okay, and you know that offset is of always 16 bit, offset is of always 16 bit. So this 07 will be converted into, I want everyone to have a keen observation on this. 07 will be converted into 0007. 0007. Okay, 0007. Now this DI will point to memory address, and this DI will point to data segment, by default data segment, by default data segment. So I can write down MA, you are familiar with MA, memory address। अगर मैंने नीचे में S लिखा रहता था तो आपको पता चलता था कि वो स्टैक मेमोरी एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे E लिखता था तो आपको पता चलता था कि एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो आपको पता है ये मैं डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो MA इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यू नीड टू आस्क मी। सो मैंने पहले बताया कि 07 इज यूज एज ऑफसेट, और आपको पता है ऑफसेट हमेशा या फिर इफेक्टिव एड्रेस इज हमेशा 16 बिट का होता है। तो 07 इज कन्वर्टेड इनटू 0007। नाउ द मेमोरी एड्रेस लोकेशन विल बी गिवन एज, हियर मैं क्या लिख रहा हूँ, विल बी गिवन एज डेटा सेगमेंट। कैन आई से डेटा सेगमेंट इज योर बेस एड्रेस? सो बेस एड्रेस I have to convert into the physical address, so you will multiply by 16 decimal, so 16 to the base 10, या फिर आप बोलोगे वो बेस एड्रेस को मैं 0 अपेंड कर दूंगा, जो मैंने हमेशा आपको मैंने बताया। So DS register will have the base address, you are multiplying by the 16 base 10, that is decimal 16, plus this is important, plus your DI में जो भी मेंशन है, that is destination index register में जो भी मेंशन है, that DI plus 0007. I am going very slowly because I am unable to explain you physically on the board, but this thing will help you out because here you will understand. Okay, now see here, now your memory address location that is in the data segment, how do you get the physical address, that is 20 bit of physical address? You have the offset, that is 0007, but this 0007 is added with the DI. Your DI will have some register value. अभी DI का can anyone of you tell me what is the size of DI? It is 16 bit. The size of DI is 16 bit. So 16 bit of register value will be added with the 16 bit of 0007. That particular number you will be getting, that will be added with the TS register value, जहाँ पे आपका base address है. So can I say this whole calculation will give you 20 bit of memory address location in the data segment. This whole calculation will give you the 20 bit of physical address in the memory location in the data segment. Yes. Okay, so
can I say ultimately what is getting exchanged? I'm writing down here. अभी जगह नहीं है. अब देखो यहाँ पे फाइनल में क्या लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग डाउन इन फाइनली. क्या एक्सचेंज हो रहा है? आई एम राइटिंग डाउन हियर. So these are the some terminologies you should know. Theoretically नहीं हमेशा यूज करना है. So this terminology should be know. So can I write down MA semicolon MA plus 1. This thing is getting exchanged with the content of dx. The content of dx. इसका मतलब क्या है? Suppose see here. Suppose you have these data segment. अब डेटा सेगमेंट में आपको वो मेमोरी लोकेशन मिला है. ये देखो ये मेमोरी लोकेशन मिला है. कैसे मिला है? ये सब कैलकुलेशन करने के बाद. तो आपका MA है, दैट इज मेमोरी एड्रेस लोकेशन, यहाँ पे है, और MA+1 यहाँ पे है. आपका MA यहाँ पे है और MA+1 लोकेशन यहाँ पे है. अभी आपका जो डीएक्स में जो वैल्यू है, आपको पता है डीएक्स का साइज कितना है? 16. डीएल लोअर 8 बिट, डीएच हायर 8 बिट. तो लोअर 8 बिट will go where? It will go into MA. So I can say DL का जो वैल्यू है वो जाएगा MA में, और MA का जो वैल्यू है वो जाएगा DL में, और MA+1 में क्या जाएगा? वहां पे जाएगा DH. तो हो गया एक्सचेंज. So DH and MA+1 are getting exchanged. DL and MA are getting exchanged. That is why ये पूरा लिखा है. उसका मतलब ये सब होता है ऊपर जो लिखा है. और ये मेमोरी एड्रेस और MA+1 कैसे मिलेगा? वो आपको यहाँ से मिलेगा. अगर आपको MA का एड्रेस मिल गया 20 बिट का, तो उसमें +1 कर दो, आपको नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन मिल जाएंगे. ओके. So this is how the calculations are done internally by the processor. If you have any doubt, please ask. नहीं सर समझ. मुझे दो डाउट है. हाँ सर वो 07H से ही क्यों सर वो हम लोग ने ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया. आप 03, 04 जो लेना है वो ले सकते हो. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया. ओके सर. सर मेरा और दूसरा क्या डाउट है? हाँ सर जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो सर हम लोग सर हम लोगों को कोई टेम्पररी मेमोरी लोकेशन लगेगा ना सर एक्सचेंज करने के लिए? यस. कभी भी हमेशा याद रखना, टेम्परेरी जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो वी आर यूजिंग सम टेम्परेरी लोकेशन. So temporary locations are used either by AX or BX. Okay. So AX and BX are used as a temporary location, but we are not exact knowing that is happening through AX or BX because these are the internal operations happening. हमको सिर्फ लिखना क्या है? हमको सिर्फ लिखना है XCSG DI plus 07H DX. DX में कुछ वैल्यू होनी चाहिए और DI में वैल्यू होनी चाहिए, बस. बाकी का सब कैलकुलेशन, ये जो मैंने नीचे दिखा है, ये सब कैलकुलेशन इंटरनली होते हैं, और ये जो मैंने ऊपर दिखा है ये भी सब इंटरनली होता है. तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए कैन बी यूज एज AX और कैन बी यूज एज BX. So that is not known to the programmer. That is happening internally. Okay, Is sir. it okay? Okay. Yes. Any more questions? Any more doubt? See, if you are you will not find this explanation properly in any of the book. So this is the time for you to understand each and every concept. That's why I'm taking very slowly. I am spending lot of time for each and every instruction so that your concepts will be clear. DI क्या है, ऐसा क्या है, DI plus 07 होता है तो 07 को मैंने 0007 क्यों किया है, मैंने DI को फर्स्ट ऑपरेंड ही क्यों किया है,
ऐसा को सेकंड ऑपरेंड ही क्यों किया? These are the minute details which will never be covered in any of the test book. So you have to be very attentive while understanding this concept. And if you have any doubt, please ask me. If it is okay, we will continue further. Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. I think we are familiar with the instruction of CMP. Are we familiar with the instruction of CMP? हाँ sir, compare. Yes. So compare instruction already हमने किया है. So this instruction is not new to any one of you. Okay. Yes, but then sir. else, so even you write down one thing. अच्छा आपने इतना लिख लिया ना, अब एक काम करो, राइट डाउन एक नीचे में और एक इंस्ट्रक्शन लिखो, बिकॉज वो हम आगे यूज करने वाले, तो आपको पता होना चाहिए. राइट डाउन JB, ये इसके बारे में बता रहा हूं मैं. एक मिनट. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस JB. ओके, यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल एज यस, राइट डाउन JB डिस्प्ले 8. ये क्या करता है, यू प्लीज राइट डाउन. डिस्प्ले 8 इट इज इन जनरल. इट इज इन जनरल. हम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज JB, व्हाट इज DISP8. यू विल अंडरस्टैंड इन द प्रोग्राम. सो राइट डाउन jump what is the meaning of JB DISP8? the meaning आप लिख रहे हो, उसके आगे लिखो आप jump if CF is equals to 1. jump if CF is equals to 1. jump if, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, jump if CF is equals to 1. jump if CF is equals to 1. अभी देखो अल्टरनेट नाउ, उसका नाम आप ये भी यूज कर सकते हो JNAE, या फिर और एक है इसका अल्टरनेट, वो है ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आगे में, दैट इज JC. एंड यू आर फेमिलियर विद JC, दैट इज जंप इफ कैरी. अगर कैरी आता है तो जंप करना है, JC. ओके, JC का मतलब होता है जंप इफ कैरी. jump if carry. But there is a difference between JC and JB. So somewhere in this write down, you will be doing this as a homework, or you will be taking this as a different assignment question. I want the exact difference between JC and JB with an example. Okay, there is a minor difference, but I want you to do by yourself. एक बात पक्की है कि दोनों भी जंप करते हैं जब CF 1 होता है. एक तो बात पक्की है कि दोनों भी जंप करते हैं जब CF 1 होता है, लेकिन एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंस है, यू विल लेट मी नो. ओके, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन आल्सो डू फॉर JNE. ओके, सो दिस इज द वन थिंग. सो वी हैव डन विद द JB. ओके, देयर इज वन मोर थिंग. Okay, we will see later on. Now we'll write down the program. 20 minutes are left. We'll write down the program now. So you know so I will go to the TASM. This is done by my child. Okay, ये जो alien दिख रहा है आपको. So we'll go to the DOS and edit. Yes, now we are what we are doing, we are writing down the program to find to sort the number in the ascending order. So I will just write down ASC dot ASM. So ASC stands for ascending, और दूसरा फाइल बनेगा that is a DES, that is for descending. Okay, and enter. You will enter into the editor window. Here you will be writing down the program. Okay, so I'm writing down the program. Pay attention. So data segment. तो मेरा डेटा सेगमेंट डायरेक्टली ले लिया मैंने. Enter. Now I am taking an
array बोले तो collection of numbers, that is a variable, and these numbers are byte. So array define byte, and the numbers which I'm taking are 03h, comma 05h, comma 01h, comma 09h. So I am taking only 4 numbers 03, 05, 01, 09. और ये नंबर्स मैंने एरे लिया है, ये नंबर्स मैंने लिए और उसको मुझे असेंडिंग में लगाना है. असेंडिंग बोले तो पहले 01 आएगा, बाद में 03 आएगा, बाद में 05 आएगा और लास्ट में जाएगा 09. ओके, ये नंबर्स है जो अनसॉर्टेड फॉर्म में है और उसको मुझे अरेंज करना है असेंडिंग. ओके, सो आई एम टेकिंग वन एरे. तो आपको पता है डेटा सेगमेंट में मैंने एरे डिफाइन किया, तो मेमोरी स्पेस इज अलोकेटेड इन द डेटा सेगमेंट फॉर विच वेरिएबल? फॉर एरे. हाउ मेनी मेमोरी लोकेशंस? 4 मेमोरी लोकेशन. एक में जाएगा 03, दूसरे में जाएगा 05, तीसरे में जाएगा 01, चौथे में जाएगा 09. ओके, नेक्स्ट. नाउ आई एम यूजिंग द काउंटर. ओके, और वो काउंटर को मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, दैट इज द काउंट, COUNT, काउंट. अभी देखो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज कर रहा हूँ, EQU, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. Now EQU is not an instruction, but to be more specific, this is an assembler directive. What this directive is doing, it is assigning something to variable count. And what is it is assigning? I am assigning 04h. मैंने नंबर 4 लिए है, तो इसलिए मैंने काउंटर को 4 असाइन किया. So count is assigned with 04h. बस, this is my data segment. Data ends. Okay. So data ends. Next. So this is about the data segment. Now comes the code segment. Now here assume, वही हमेशा जो हम लिखते हैं, assume CS as code, comma, just a minute, I will not write in small letters. CS code, comma, and DS colon data. DS data. So डेटा सेगमेंट का नाम है डेटा, जो यहाँ पे लिखा है, और कोड सेगमेंट का नाम है कोड, जो यहाँ पे लिखा है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग. एंटर. तो start colon, and you will be writing down here, move AX, comma data, move X, comma data. Okay, now I am again giving one more label now. Okay, AGARN 1, again 1 एक लेबल का नाम है, और वहां पे मैं लिख रहा हूं move CX, comma DX, move CX, comma DX. Okay, now here move AX, comma data, that means डेटा में जो भी आपकी जो नंबर्स है, that will be moved into the AX whenever it is required, and move CX, comma DX, that means the DX which is having the count value will be moved into CX. Okay, so this explanation will be understood in the further instruction. What is CX, comma DX? Okay, now this is for again 1. Now one more I am writing down the label, again 2. Now this is a label, you can write down any name, there is no problem. So move AL, comma, now see here what I am doing. Yes, what I am saying now, move AL, comma, in the square bracket SI. Now source index में जो भी रहेगा, that will be used as an address. Now what do you mean by the square bracket? Square bracket में बताता है वो कि
SI में जो भी SI रजिस्टर में जो भी वैल्यू है 16 बिट की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में that value will point to some memory address और वो मेमोरी एड्रेस में जो भी कंटेंट है that is moved into AL अगेन आई एम रिपीटिंग यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है SI है तो इसका मतलब है कि SI जो कंटेंट SI की जो वैल्यू है that is not moved in AL but SI में जो भी वैल्यू है that value is pointing to the memory address location in the data segment और वो मेमोरी एड्रेस लोकेशन में जो भी कंटेंट है that is moved into AL ओके अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहता था तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि SI का जो कंटेंट है that is moved into AL लेकिन अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए मैं बताऊंगा SI में जो कंटेंट है that is used as a एड्रेस लोकेशन और वो एड्रेस लोकेशन में जो कंटेंट है that is moved into AL okay I hope you have understood. If you have any doubt, you can ask. Register indirect. Yes. It is a register indirect addressing mode. या इतने दूर जाने की भी जरूरत नहीं है हमेशा याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आता है तो इट इज रिलेटेड विद द एड्रेस इट इज नॉट रिलेटेड विद द कंटेंट ओके इट इज रिलेटेड विद द एड्रेस सो व्हाट यू हैव रिटन अगेन टू colon move AL comma in the square bracket SI. Then I am writing down here actually now the next label is for the program the instructions for ascending आप कैसे करोगे उसके लिए ये नेक्स्ट वाला लेबल है तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिलेटेड फॉर सॉर्टिंग that is written here now so ascending ASC colon now here actually you are using the instructions which will sort okay now see what I am writing now ADD SI comma 01 ADD SI comma 01 अब ये क्या हो रहा है आपका SI की जो है कंटेंट उसको मैंने एक से बढ़ाया एक से कैसे बढ़ाया पहले SI था अभी उसको मैंने SI+1 कर दिया तो वो कैसे हुआ add SI comma 01 so 01 will be added with the content of SI and that added value or the final result will be stored into SI that is a simple meaning okay then the next instruction is move DS comma AX move DX comma AX okay so the content of AX after you do this particular addition the content whatever the content in the AX will be moved into the data segment that is the data okay so move D जो हमने अब तक देखा ना AX comma DS DS comma AX so that is the same thing move DX comma AX okay the next one move DX comma count -1 see there are different manners there are different ways in which you can write down the program this is the one way I am giving you so that you will be able to understand the different the different variations the different ways in which you can write down the program okay तो मैंने क्या लिखा count -1 so move count -1 because count मेरा क्या है इक्वेट किया था मैंने 04 से अभी उसको count -1 किया तो 03 बाद में फिर से -1 होगा तो 02 01 00 ओके सो मूव DX कॉमा जब तक सॉर्टिंग नहीं होता है ओके सो मूव DX कॉमा count 1 उसके बाद में देखो मैं क्या लिख रहा हूं मूव SI comma offset array now this is very important I want everyone to pay attention this is very 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 important okay अभी ये देखो move SI comma offset of array now this is the way in which you want to just mention the offset of the array का क्या मतलब होता है ये देखो यहाँ पे आपको पता है डेटा सेगमेंट में 4 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हुए हैं
03, 05, 01, 09, वो मेमोरी एड्रेस 20 बिट का होता है। लेकिन मुझे 20 बिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 बिट, सॉरी, मुझे सिर्फ 16 बिट का ऑफसेट चाहिए। मुझे सिर्फ 16 बिट का ऑफसेट चाहिए, और वो 16 बिट का ऑफसेट मुझे मूव करना है एसआई में। वो 16 बिट का ऑफसेट मुझे मूव करना है एसआई में। तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, मूव एसआई कॉमा ऑफसेट एरे। ऑफसेट एरे का मतलब होता है 03 जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है वो मेमोरी लोकेशन का ऑफसेट, 05 जिस मेमोरी लोकेशन में है वो मेमोरी लोकेशन का ऑफसेट, similarly for 01, similarly for 09. So that one by one the offset will be moved into SI. That is the meaning. Okay, that will be moved into SI. Okay, then next CMP. Now here compare. I am comparing, and you know I am comparing. That means actually subtraction हो रहा है. I am not interested in the result of the subtraction, but I am interested in the flag. And which particular flag? I am interested in the carry flag. I am interested in the carry flag. Okay. So please remember, there is a difference between SUB and CMP. SUB, I am interested in the result. Compare, I am not interested in the result, but subtraction करना है और मुझे I am interested in the carry flag. Okay. So CMP AL comma, see what I am writing down now here, square bracket SI plus 1, SI plus 1. अभी देखो क्या है, ऑफसेट एरे, ऑफसेट एरे यानी ऑफसेट ऑफ एरे। तो पहला कौन सा है, 03, 03 का जो भी ऑफसेट एड्रेस है और वो ऑफसेट एड्रेस में 03 है, and that 03 is moved into SI. That is moved into SI. Okay. Or you can say, we'll do one thing. We will not say that the 03, but actually the offset address is moved into SI. और वो offset address SI में होने के बाद, that offset address is moved into SI. Can you see here? Move AL comma SI. और वो SI में जो भी, that is the value, ऑफसेट एड्रेस, और वो ऑफसेट एड्रेस में जो भी कंटेंट है दैट इज 03 विल बी मूव्ड इनटू AL, दैट विल बी मूव इनटू AL. ओके, तो क्या हुआ है, अल्टीमेटली आई कैन से दैट AL में 03 गया है, AL में 03 गया है. ओके, और अब जब मैं कंपेयर AL कॉमा SI प्लस 1 करता हूं तब क्या होता है, तब SI प्लस 1 दैट इज द नेक्स्ट, SI प्लस 1 दैट इज द नेक्स्ट ऑफसेट एड्रेस, और उस ऑफसेट एड्रेस में क्या है, 05. नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन डूइंग, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन is comparing 03 and 05. So can I say compare is nothing but 03 minus 05. So tell me 03 minus 05 will generate carry flag or not? Yes, sir. Yes, because 03 minus 05 Negative answer आएगा, negative sir. answer. Yes, negative answer, that means carry flag will be generated. और अगर पॉजिटिव आंसर, कैरी फ्लैग विल बी 0. ओके, सो कंपेयर AL कॉमा SI प्लस 1 विल गिव यू द कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1. और जब कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 क्या आता है, आप देखो अभी इंटरेस्टिंग है, इसके बाद तुरंत क्या आता है, इसके बाद तुरंत आता है JB, JBASC, JBASC. अभी इसका मतलब मुझे कैरी फ्लैग में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने CMP यूज किया, कैरी फ्लैग मेरा 1 हो गया. जंप इफ बिलो का मतलब होता है जंप इफ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1. कैरी फ्लैग आया, हाँ आया, कहाँ पे जंप करना है, ASC लेवल पे जंप करना है. ASC लेवल किधर है, यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जाके ये फिर से एग्जीक्यूट करना है, ये फिर से एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो उसके बाद क्या क्या होगा, दिस थिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ यू हैव टू बी वेरी काम for understanding this. I am just making you understand in more into the detail, but you have to do by yourself. वो जो loop तैयार होता है, वो loop कैसे तैयार होता है, after checking the CF flag, after every time you check the CF flag and you have to form the loop. Okay, और अगर carry flag नहीं आता है, you are executing what, वो नीचे मैं लिख रहा हूँ,
वो क्या कर रहा हूं मैं, देखो XCHG स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट SI प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा AL। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था फर्स्ट ऑपरेंड DI डेस्टिनेशन इंडेक्स और सेकंड ऑपरेंड SI। नाउ सी हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉट SI हियर, वी हैव गॉट SI हियर। नाउ you can as per the finding, now you can make out that SI can also be used in the destination, but here actually the destination नहीं है, यानी मेरा रिजल्ट DI में, मेरा रिजल्ट SI में नहीं जाएगा। What I mean to say that you can use SI as well as DI along with the +1 0 हमने वहां पे क्या लिया था, 0 7 लिया था, यहाँ पे मैं +1 ले रहा हूँ। ओके, अगर 0 1 लेना है तो अगर कुछ एरर आएगा तो you have to correct by 0 1। ओके, so what I mean to say that अगर कैरी फ्लैग नहीं आता है तो एक्सचेंज क्या करना है, ये दोनों को एक्सचेंज करना है। तो मुझे ये भी बताना है आपको, मैं ऐसा भी लिख सकता था एक्सचेंज AL कॉमा इन स्क्वायर ब्रैकेट SI + 1। सो आई वांट यू टू डू दैट एज अ होमवर्क। ओके, और उसमें एरर आता है क्या, I am purposely writing down here SI + 1 here, and if it is working, so we can conclude that SI and DI can be interchanged with the offset of +1 +2 +3। okay, so this is left to you। so we have, देखो हमको ये समझ में आया कि जो पहला जो AL में जो हमने लिया था वो छोटा नंबर है, तो इसलिए मुझे एक्सचेंज करना है, तो दोनों में मैंने एक्सचेंज किया। और एक बात है, ये यहाँ पे ही क्यों लिया और यहाँ पे क्यों लिया, उसका और एक मतलब है कि वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग, ओके, वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग AL का कंटेंट SI + 1 में, SI + 1 का कंटेंट AL में। ओके, नेक्स्ट थिंग again XCHG in square bracket SI square bracket close comma AL। now this is also interesting, exchange I have used 2 times। पहले मैंने AL और SI को एक्सचेंज किया, SI का कंटेंट AL में, AL का कंटेंट SI में। so what is actually happening, ऐसा हो रहा है कि आपका SI + 1 में है वो अभी है 3, और AL में जो पहले 3 था उसमें अभी है 0.5। ओके, उसमें है आपका 0.5। बाद में आपने क्या किया, आपने बाद में SI में 0.5 लिया, और SI में जो पहले था, SI में पहले क्या था 0.3। व्हाट वाज देयर इन प्रीवियसली SI, सी SI + 1 मैंने जब मैंने इसको कंपेयर किया, ओके, कंपेयर किया, वी हैव गॉट द रिजल्ट। what is after comparing what is present in AL and what will be present in the SI, whether AL का कंटेंट चेंज होता है क्या, SI + 1 का कंटेंट चेंज होता है क्या, वही रहता है, इट विल रिमेन सर। हाँ, इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम। पहले SI में मैंने लिया था 0.3 और SI + 1 में लिया था 0.5, अभी उसको इंटरचेंज किया, ओके, एंड नाउ आल्सो आई एम इंटरचेंजिंग दिस, but here it is now exchanging with SI + 1। so are we taking 0.5 or 0.1 now for the next comparison? okay, we will see this, let me execute the next instruction, that is loop AGAIN again 2, loop again 2। इसका मतलब क्या होता है, we have to continue this with this particular move AL, SI। अभी SI में जो नई वैल्यू आएंगी वो AL में जाएंगी, ओके, SI में जो नई वैल्यू आएंगी वो AL में जाएंगी। ओके, so this loop will be continued, ओके, so जब तक आपका कैरी फ्लैग 1 नहीं होता, this loop will be continued, so loop again 2। ओके, उसके बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं CX को, डिक्रीमेंट CX। ओके, now CX वैल्यू कैन यू सी हियर, डेटा सेगमेंट में DX की वैल्यू जो थी वो काउंट में थी, वो मैंने CX में DX, ये मूव CX का हमारा DX हम जब करते हैं ना तो 0.4 विल बी मूव टू CX। सो पहले जो 4 था वो अभी हो गया 3। व्हाट आई एम राइटिंग डाउन हियर नाउ, J and Z जंप इफ नो 0, यानी आपका काउंट जब तक नहीं 0 होता है तब तक कहा जाना है J and Z,
कहाँ पे जाना है, AGARN1 यहाँ पे जाना है, मूव CX कॉमा Shobhit DX। sir, हाँ हाँ I have taken the attendance. ओके ओके थैंक यू, बस लास्ट 2 minutes है, हाँ यस you may leave, you can go. So JNZ again one, then move AX comma 4CH. So I was able to explain you what is move AX comma 4CH and INT 21H. Okay, you can take the snapshot of this, otherwise I will be giving you the recording. Okay, you just study these steps. Okay, and the last 3 or 4 steps I will explain you in the next session. Okay, so this is INT 21H and code ends and end start. Okay, code ends and end start. So this is for this one. Okay, so this is the final code, so please save this. Okay, so we'll do one thing, I will not jump to execution of the program. First we'll try to understand the below important instructions, that is AX comma 4CH and INT 21. This was I was supposed to take, so I will take this in the next lecture. Okay, you can take the screenshot of this, otherwise I am going to share this on the recording. Okay, you have to see one by one. Okay, जैसे आप स्टेप एग्जीक्यूशन करते हो ना, वैसे आप खुद भी ये इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, you go by this in that way. Okay, so every instruction I have already explained you. Compare, you know JB, you know CSG. Okay, the loop instructions, that is continue when this your carry flag becomes 1. Okay, that is loop instruction, execute the loop form the loop. Okay, so this will go on, then decrement, then JNZ. So I want everyone to go through this program. Okay, you do this as a homework. The next time I will explain you this program and we'll move further with the next subtopic. Okay, if you have any questions you can. हाँ बोलो सर, वो अगेन टू लेबल में सर मूव AL कॉमा कंटेंट ऑफ SI है, तो सर SI एरे का फर्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है क्या, मतलब जो सोर्स इंडेक्स? यस, नो, जब हम SI लेते हैं ना, आपको यहाँ पे SI लेना पड़ता है, +1 +2 ये यहाँ पे नहीं चलता. ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे अगेन टू लेबल में सर आगे ये वाला ना, हाँ सर, मतलब आपने वो जो एरे ऊपर डिफाइन किया था सर, उसके बाद हमने SI ऑटोमेटिकली, मतलब वो एरे का फर्स्ट कंटेंट ये अज्यूम करता है क्या, बिकॉज हमको वो AL में मूव करना है इसलिए? यस यहाँ पे आप SI +1 करना है, अगर जरूरत है तो कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा जब लेते हो ना, तो आपका ये जो फर्स्ट नंबर है, आपका ये जो फर्स्ट नंबर है 03 का, इसका जो ऑफसेट एड्रेस है, और वो ऑफसेट में जो 03 है, दैट विल बी मूव इनटू AL. अगर आप SI +1 करते हो तो दैट इज 05, दैट कंटेंट विल बी मूव इनटू AL. लेकिन बाय डिफॉल्ट SI लेना है, क्योंकि हमने मूव क्या किया है, ऑफसेट एरे इनटू SI. So by default the first content will be 03. By default the first content will be 03. Is it okay? ओके सर, एक डाउट है सर, मतलब अगेन टू पहले जो अगर सर एग्जीक्यूट होगा कंपाइलेशन के टाइम पे, तो सर वो अज्यूम करेगा 0, एंड फिर जब ASC जो हमने लेबल यूज किया उसमें जब मूव SI कॉमा ऑफसेट एरे वाला जो कमांड है वो, तो वहां से वो इनिशियलाइज करेगा ना सर 03H SI के अंदर? हाँ बराबर है. यहाँ से ना, हम जब यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से जब हम यहाँ से हम जब करते हैं ना, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे अगेन 2 बता रहा हूँ. ओके, नाउ हियर SI आई एम यूजिंग, SI में जो भी कुछ कंटेंट है, ओके, बट आई डू नॉट नो व्हाट इज दैट कंटेंट इन दिस SI. But when you are writing down offset of array into move SI, then this particular instruction will be executed. Okay, till that there will be some garbage value into AL. लेकिन जब offset array की जब बात आती है, और आप जब उसको SI में मूव करते हो, और बाद में जब आप यहाँ पे अगेन 2 पे जाते हो, तो AL में जाता है 03. AL में जाता है 03. पहले गार्बेज वैल्यू जाती है, वी डू नॉट नो व्हाट इज दैट वैल्यू, बट ये जब होता है ऑफसेट एरे, और इसके बाद में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बाद आपके AL में जाता है 03. क्लियर? यस सर, समझा सर. हाँ, so that is the meaning. So those have any questions, please stay, otherwise others can go. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.
सर नहीं सर मेरे को एक और डाउट है सर। हाँ सर SI कॉमा ऑफसेट एरे हमने सर किया, सर उसके हाँ, बाद AL को हम लोग SI+1 से कंपेयर करेंगे, तो मतलब सर AL में तो अभी करंटली 0 0 था ना सर, और अगर आपका SI+1 का कंटेंट लेंगे तो सर दैट विल बी 05H, तो सर देखो मूव 03H। देखो मूव ऐसा कॉम ऑफसेट एड्रेस करते हो ना, तो आपके हाँ एसआई में क्या जाता है, आपके एसआई में जाता है 03 का एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, 03 हाँ का सर। ऑफसेट एड्रेस, बराबर है। यस बाद सर। में फिर आप उसको एक से बढ़ाते हो, हाँ जब आप सर। उसको ए से बढ़ाते हो तो 05 का एड्रेस रहता है, और 05 का एड्रेस में क्या है, 05 वो कहा जाता है, वो SI हाँ प्लस वो वन हाँ SI+1 हो जाता है, दैट इज 05। और एएल में आपका 03 है, ओके, एएल में आपका 03 है। तो ये कब होता है, जब आप ये एग्जीक्यूट करते हो ना लूप अगेन, ये पहले इसमें नहीं होता है, वो सेकंड जब लूप स्टार्ट होता है ना, तब एएल में आपका 03 जाता है, एएल में 03 गया, और बाद में SI+1 हो गया, तो फिर SI+1 बोले तो 05, और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, 03 इज कंपेयर्ड विद 05, 03 इज कंपेयर्ड विद 05, तो यहाँ पे कंपेरिजन होगा और कैरी फ्लैग 1 होगा। ओके, तो जंप इफ कैरी फ्लैग इज टू 1, कहाँ जंप करना है, फिर से यहाँ पे जंप करना है, फिर से आपको एसआई को एक से बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे एक से बढ़ाओगे तो आपका एसआई में 0 1 जाएगा, या फिर उसका एड्रेस जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू। So that's why I'm saying you take a pen and you have to just go on seeing that how instructions are executed one by one, and you can write down the comments in before that. Then you will be able to understand that. ओके सर। Okay. ओके सर, थैंक यू सर। Okay.